Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Nosheen Kamran and I am your science teacher. Today we will study Unit 9, Force and Motion. No object can move on its own unless some force is applied to push or pull it. Have you ever observed in autumn leaves fall from trees onto the ground? Why do they always fall downwards? Is there any force that pulls everything towards it? The answer is yes. That force is gravity. Now we will discuss gravity. Gravity is the force which causes objects to fall towards the earth. We stand on earth due to its force of gravity. All objects have gravity. Some objects, like the earth and the sun, have a more gravity than others. Gravity also exists between two books placed side by side, but we cannot notice it because of their little masses. In the picture, leaves falling onto the ground, it's due to force of gravity. Gravity is very important in our daily life. Without the Earth's gravity, we would fly off in the air. We would all have to be strapped down. Now we will study friction. Friction is the force produced when two surfaces rub against each other. In our daily life, when we rub our hands, we feel heat. This heat is produced because of the force of friction. Friction works against motion and acts in the opposite direction. For example, if you push a box to move in the forward direction, friction will push it in the backward direction to resist the movement. This motion changes the position of the box, as we can see in the picture. We apply a force to make different objects move. A force can be applied with the help of simple tools and machines. Now we will discuss what is a machine. Everything we use to make our work easier is a machine. Simple machines. A simple machine is something with just one or two parts that makes work easier. Different simple machines help us in two ways given below. Number one, they change the direction of force. Number two, they reduce the amount of force by increasing the distance of force.
Here are some types of simple machines: levers, inclined planes, gears, and pulleys are simple machines. Let's study about these simple machines. Number one, pulley. A pulley has two components: a grooved wheel and a rope passing over it. Here we can see picture of pulley. A pulley makes work easier by changing the direction of force. For example, if we want to move a heavy load upwards, we can apply an effort downwards by using a pulley. Next simple machine is lever. Lever is used to move heavy weight. A lever is a bar that turns around a fixed point. The fixed point is called fulcrum. The effort is applied to one end to move an object called a load. As we can see in the picture, seesaw in the playground is the best example of lever. Inclined plane. It is always difficult to move things upwards. A ramp is usually used for this purpose. It is also called an inclined plane. It is a simple machine with a flat surface, with one end higher than the other. We can see it in the picture. Examples of inclined planes are staircases, wheelchair ramps, slanted roofs, slanted roads, slides in the playground. The next simple machine is gear. Wheels with meshed teeth are called gears. They are an important invention of humans. They are used in almost every complex machine. For example, bicycles, clocks, motors, toys have gears to perform their functions. Machines typically use two or more gears of different sizes. One gear is often larger than the other.
बच्चों, आज हमने पढ़ा ग्रेविटी क्या है। ज़मीन की वो क़ुव्वत जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचे रखती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। कुछ चीज़ों में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि अर्थ और सन, और कुछ चीज़ों में ग्रेविटी बहुत कम होती है। अगर ग्रेविटी ना होती तो हम हवा में उड़ते रहते, ना हम चल फिर सकते। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ की क़ुव्वत। जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। यह हीट इसी फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसी तरह आप तस्वीर में देखो, एक बच्चा बॉक्स को आगे को मूव कर रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और बॉक्स आगे को मूव हो रहा है। तो बॉक्स और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, जो कि रेजिस्ट करती है कि बॉक्स आगे को मूव ना हो। इस कुव्वत को हम फ्रिक्शन कहते हैं। फोर्स को हम सिंपल टूल या मशीन की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। मशीन क्या होती है? और वो चीज़ जो हमारे काम को आसान बना देती है, उसको हम मशीन कहते हैं। सिंपल मशीन्स, सिंपल मशीन्स के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि सिंपल मशीन्स हमारे पास लीवर्स, इंक्लाइन प्लेन, गियर और पुली, ये सारी सिंपल मशीन्स हैं। सिंपल मशीन जो होती है वो एक या दो पार्ट पे मुश्तमिल होती है। पुली, पुली के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ग्रूव्ड व्हील और दूसरा रोप, जो व्हील के गिट से घूम के जा रही होती है। पुली हमारे काम को इस तरह से आसान बना देती है कि हमारी एक तरफ लोड है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस तरह लोड अपवर्ड आ जाएगा। जब फोर्स हम लोड उठाने में ये मदद करती। लीवर क्या होता है? ये एक बार होता है और एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द ये टर्न करता है। एक तरफ इसके लोड होता है, फिक्स्ड पॉइंट को हम फुलक्रम कहते हैं। एक तरफ इसके लोड होता है और जो फोर्स इसको मूव करने के लिए अप्लाई की, इसको मूव करने के लिए एक तरफ हम फोर्स अप्लाई करते हैं। प्लेग्राउंड में बच्चे जब झूला लेते हैं, वहाँ सीसा इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। के दरमियान में से जैसे फिल्क्रम उसका फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट है, वो जुड़ा हुआ होता है। एक तरफ आपका फ्रेंड बैठा होता है, दूसरी तरफ आप, और इस तरह पहले एक तरफ एफर्ट अप्लाई होती है और दूसरी तरफ से जो आपका फ्रेंड है वो ऊपर को उठ जाता है। फिर इसी तरह आप का फ्रेंड फोर्स दूसरी साइड पे अप्लाई की जाती है, तो वो आप ऊपर को मूव हो जाते हो। इंक्लाइंड प्लेन हैवी चीज़ों को उठाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रक्स वगैरह में सामान लोड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, रैंप को यूज़ करते हैं। स्टेयर्स वगैरह, व्हील चेयर, ये सारी जो हैं, या स्लाइड्स जो आप प्लेग्राउंड में देखते हो, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। गियर, गियर एक ऐसा व्हील होता है जिसके साथ टीथ लगे होते हैं, मैश्ड टीथ, और ये इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है इंसान की। बाइसिकल्स में ये यूज़ होता है, क्लॉक्स में, मोटर्स में ये यूज़ होता है। मशीन्स में अमूमी तौर पर दो या ज़्यादा गियर्स यूज़ होते हैं। एक गियर का साइज़ अक्सर बड़ा होता है दूसरे
की निस्बत। यह आज के सबक में हमने यह सीखा। थैंक यू।